Okay, guys, I see many of you have joined, so we can start. Can someone confirm if my screen is visible? Yeah. Okay. So, Prabhat, continuing to your question, Yes. you asked image. Understand, guys? I didn't understand what exactly are you asking. Are you asking कि ये virtual machine का पैसा लगेगा या इस image को save करने का पैसा हाँ, लगेगा? उस What are you इमेज का asking? उस इमेज को सेव करने का पैसा नहीं Yes, लगता है। yeah. लगेगा, definitely लगेगा. You are saving something on Azure storage, so Azure will cost you. Azure will charge you. All these images you have not shared them. जिसने सेव किया उसको चार्ज लग रहा होगा, राइट? या फिर ये अज्योर ने एज अ सर्विस फ्री में दिया होगा, बट यू आर नॉट बीइंग चार्ज फॉर दिस वन. लेकिन अगर आप इसको सेव करके रखोगे तो 10 GB भी क्यों ना हो, आप अज्योर का 10 GB का डेटा यूटिलाइज कर रहे हो, राइट? सो इट विल कॉस्ट यू. इज इट क्लियर प्रभात या कंफ्यूजन है फिर? yes. इन कंपनीज दे कॉल समथिंग एज गोल्डन इमेज, इसी को बोलते हैं क्या, जो ये क्रिएट करके फिर उससे 100 मशीन्स क्रिएट कर, समथिंग लाइक दैट? एग्जैक्टली वैसा ही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है, बट द गोल्डन इमेज इज अ पर्टिकुलर technical term of your Azure VDI. We don't cover VDI here. Azure VDI, it's a separate paper 140. VDI में जो है golden image का word use होता है, but the concept is exactly same. Exactly same वही concept है. यही आपका golden image है. Golden image बोलते ही उसी को जिसके थ्रू बाकी सब जो है बनाए जाएंगे. Original one, इससे सारे कार्बन कॉपी बनेंगे. So that is your golden image. You can use golden image word यहाँ पर भी. It's not a problem. But just for your knowledge, that's a specific technical term which you will see in Azure VDI. Got it, guys? Yes. Why do we use golden image या VDI क्यों use होता है? I'll tell you. Let's say you are working as a service desk analyst या फिर call center में कोई काम कर रहा है. Now I know my one employee who will be working, उसको Outlook चाहिए, उसको MS Excel चाहिए, उसको सिस्को का जैब फोन चाहिए, सॉफ्ट फोन चाहिए, एक्सेट्रा. इस तरह से 50 सॉफ्टवेयर मैंने डिसाइड कर लिए कि मेरे हर न्यू ज्वाइनी को ये लगने वाला है. Now every time I create a VDI और हर बार उसमें 50 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता बैठूं, does it make sense? No. What do I do? Same thing. I create a machine, उसमें जितने सॉफ्टवेयर लगने वाले हैं सबको इंस्टॉल कर दो, कॉल इट एज अ गोल्डन इमेज और मास्टर इमेज, उससे जो है आप रिमेनिंग मशीन्स बनाते रहो. क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट है. Okay. Can I ask one more question out of topic? Yes please. Yes please. दोनों में क्या डिफरेंस होता है? वर्चुअल मशीन और गोल्ड वीडीआई में क्या डिफरेंस होता है? हम यूज करते हैं बट मुझे डिफरेंस नहीं पता. A lot actually. We'll not cover it here. Maybe not today. It will break the rhythm. Okay. Maybe next week के initial session में मैं थोड़ा सा explain कर दूंगा. VDI में क्या difference होता है और VM में और VDI में क्या difference है. Concept same ही है, but VDI और थोड़ा सा I would say cheap version है VM का. VM में हम dedicated resource use करते हैं थोड़े बहुत. VDI में वो भी नहीं होता है. VDI में बस एक इमेज क्रिएट हो जाता है, बट विल कवर दैट लेटर. लेट्स नॉट ब्रेक द रिदम. ठीक है? सो वी वर टॉकिंग अबाउट मशीन साइज. इमेज अब ये वाला ले लो या कोई भी ले लो. वी आर डन विद दिस टॉपिक. सो एज ऑफ नाउ आई एम सेलेक्टिंग. ओके, और लेट्स टेक दिस. यही वाला लेके मैं बताता हूँ कि ये मशीन बनाने से एग्जैक्टली मुझको क्या क्या मिल जाएगा ना. आई विल शो यू. बट दिस इज ओवर नाउ. इमेज वाला टॉपिक ओवर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क, डू आस्क. इफ नॉट, VM आर्किटेक्चर क्या होता है? ये 32 बिट 64 बिट सुना होगा आप लोगों ने. वो नाउअडेज 32 बिट सब खत्म हो चुका है. इट्स एन ओल्ड वन. बहुत ही ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. कोई एक्सेप्शनल हो 2008, दैट टू R2 से पहले वाला, तब तक आता था 32 बिट वर्जन. अदरवाइज वी ऑलवेज गो विद 64 बिट. ऑलवेज. रन विथ Azure Spot डिस्काउंट. इसको एक एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं, देन विल टॉक अबाउट साइज. These are very small things, guys, लेकिन बहुत काम की चीज होती है. ठीक है? If you add all these things in your answer, it will give very good impression. It will show that you have really bought. Okay, what is Azure Spot discount? It's nothing. बस ये मशीन का अगर मुझको see, if I take this, how much is it costing me, guys? 25,000. Now what is the cost? ये cost किस चीज का है? ये cost मेरे इस image का नहीं है. Don't go by this. Image का नहीं है. Image तो कोई भी यूज कर लो मैं. It doesn't matter. ये जो साइज मैंने सेलेक्ट कर रखा है ना, इस चीज का कॉस्ट है ये मुझको. ठीक है? सो इट इज गोइंग टू कॉस्ट मी 25,000.
But the moment I click here, spot discount, see what is happening? I'm getting this much of discount, 90% से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है. But what is the catch here? Here it is. बहुत सिंपल है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं. Azure Spot offers unused Azure capacity at a discounted rate versus pay as you go. अगर मैंने पे एज यू गो में लिया है इसको, पे एज यू गो या कोई भी और सब्सक्रिप्शन, आई एम पेइंग 25,000 इफ आई यूज इट इन अ मंथ, फॉर अ मंथ, उस हिसाब से डिवाइड होगा. बाय द वे अज्योर की बिलिंग मिनट बेस पे होती है. ठीक है, ये प्राइस आपको मंथ का दिख रहा है, दैट डज नॉट मीन मैं पूरा 1 मिनट यूज करने पे इतना दे दूंगा. ये मंथली कॉस्ट है, डिवाइड होके आपका पर डे लगा लो, उसको डिवाइड करके पर आवर लगा लो, उसको डिवाइड करके पर मिनट लगा लो, एंड देन आपका मिनट लेवल पे ही बिलिंग होगा. AWS का बिलिंग आर्ली बेस पे होता है. So even if you use it for 10 minutes, AWS will charge you for 1 hour. Azure में if you use it for only for 10 minutes, सिर्फ 10 मिनट आपको ये करना पड़ेगा. So what is spot discount guys? Spot discount is that Azure का जितना भी unused capacity पड़ा है ना, वो आपको discounted rate पे मिल जाता है. But what is the catch here? Why can't I use it every time then? अगर कहाँ 26,000, कहाँ पर 2600, 20,000 रुपए बच रहे, right? Why can't I use it? तो we cannot use it because the moment Azure का capacity full हो जाता है and someone else is requesting, Azure will shut down your computer immediately. If I have selected this option, right? If I have selected this option और मैं ये मशीन को लेकर काम कर रहा हूँ and suddenly वहां पर सर्च आ गया, किसी ने 100 मशीन मांग ली सेम कैपेसिटी की, और उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर का Azure का कैपेसिटी ओवर हो गया, सो Azure विल नॉट गिव यू एनी वार्निंग, नथिंग. आपका स्पॉट जो है इंस्टेंस को वो बंद कर देगा एंड इट विल अलाइन इट टू समवन एल्स जिसने उसको पूरा पे कर रखा है. ऑन द अदर हैंड इफ आई हैव टेकन दिस वन, तो इसकी कैपेसिटी फुल भी हो जाती है. Azure में इंक्रीज द कैपेसिटी, या वो बताएगा कि इस रीजन में और कैपेसिटी नहीं है, न्यू यूजर को बताएगा यू क्रिएट समवेयर एल्स, और समथिंग जो करना है वो कुछ अलग करेगा, बट इट विल नॉट टच योर मशीन. जस्ट बिकॉज कैपेसिटी फुल हो गया, इट विल नॉट शट डाउन योर मशीन. And in this one, it will immediately shut down your machine. Is it clear guys? यहाँ पर आपका यूजेज, यूटिलाइजेशन जो चल रहा होगा, कोई काम होगा, सब कुछ जा सकता है. सो प्रोडक्शन सर्वर, काम का सर्वर, कोई भी कभी इस पे नहीं लेगा. बट आई वॉन्टेड टू, लेट्स से very lame example, don't use it, don't try it. I wanted to use YouTube in office network. Office network पे नहीं चल रहा है, let's create a machine. एक मशीन बनाते हैं, उस पर YouTube चला लेते हैं, चल जाएगा, right? And then why should I pay इतना सब? Let's click this, take the discount, इस मशीन पे चलाता हूँ मैं YouTube. And now I'm just watching maybe movie or some songs etc. टाइम पास के लिए. अब मुझको क्या ही फर्क पड़ेगा कि अगर वो immediately disconnect भी हो जाता है, right? So these are the uses which you at those time you can use spot discount. Is it clear guys? Yes. Okay, now अच्छा इसमें प्राइस का डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा. लुक एट दिस, यहाँ पर अब क्या बता रहा है, दिस इज न्यू फीचर, इट डिडंट हैव इनिशियली इट यूज्ड टू डिलीट इमीडिएटली. नाउ यू हैव ऑप्शन दैट इट वोंट डिलीट इट, इट विल स्टॉप योर मशीन आप यूज नहीं कर पाओगे, दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज आपने काफी डिस्काउंटेड रेट पे लिया है. मशीन आप बाद में कभी यूज कर सकते हो उसको ऑन करके, जब इसका सर्च कम हो जाएगा, अज्योर का सर्च जो है कम हो जाएगा, अज्योर का लोड कम हो जाएगा, देन मे बी यू विल बी एबल टू टर्न इट ऑन इफ यू कीप ऑन स्टॉप एंड डीअलोकेट. बट अगर आपने डिलीट कर दिया तो इमीडिएटली डिलीट हो जाएगा. नाउ व्हाई एम आई नॉट गेटिंग अ डिस्काउंट हियर, दैट आई डोंट नो, विल हैव टू चेक. कि अगर मुझको सेम प्राइस में स्टॉप एंड डीअलोकेट, सेम प्राइस में डिलीट मिल रहा है, देन आई विल ऑलवेज गो अहेड विद स्टॉप. क्या होगा, 1-2 घंटे के लिए सर्च होगा, मैं बाद में लेके फिर मशीन ऑन कर लूंगा, बट एटलीस्ट डिलीट तो नहीं होगा. बट इफ आई वांट के यार मुझको चाहिए ही नहीं डिलीट, लेट इट बी, मैंने बस यूट्यूब देखने के लिए मशीन बनाई थी, राइट? देन आई कीप इट ऑन डिलीट. So the moment someone else is requesting similar size and other resources are not available, Azure will stop the instance and it will delete it. Clear guys about this? Any doubt? Any question? ये ऑप्शन ऑन करना भी अपने को स्क्रिप्ट में आएगा, राइट? Not in script, in your request. Script is a different thing. Yes. Okay. Build sheet. Yes. Obviously, you can't decide on behalf of client, right? You don't know client का application कितना crucial या testing के लिए कर रहा है. Client knows that very well. Client का एक application है, let's say, उसको बस 2 मिनट में लॉगिन करके चेक करना है, तो क्लाइंट से इतना क्यों पे करूं मैं, लेट्स टेक अ स्पॉट डिस्काउंट.
क्योंकि अगर एट द टाइम ऑफ लॉगिन ऑल्सो शट डाउन हो जाता है तो इट्स ओके, मेरे पास पूरा दिन पड़ा हो, बाद में कभी कर लूंगा, राइट? सो द क्लाइंट विल डिसाइड दिस। सुहेल भाई, तो ये जब भी डिलीट हो जाएगा तो वापस से अगर मुझे वो वही मशीन की नीड है, या फिर मुझे वापस से वही उसी पर्पस के लिए यूट्यूब देखने के लिए, लेट्स एग्जांपल के मुझे मशीन लेना है वापस से, तो मुझे वापस से वो मशीन को क्रिएट करना पड़ेगा यस अगर मैं डिलीट ऑप्शन चूज यस कर रहा हूँ तो। यस, द मोमेंट यू हैव सिलेक्टेड डिलीट, एवरीथिंग विल गेट डिलीटेड। अगर उसमें आपका कोई डेटा होगा, डेस्कटॉप पे आपने एक नोटपैड सेव किया होगा, एवरीथिंग विल बी गॉन। अगर वैसा छोटा भी डाउट है, देन यू विल ऑलवेज गो विद स्टॉप एंड डीएलोकेट। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही सर्च जाता है आपकी मशीन स्टॉप हो जाएगी, वॉट एवर यू आर वर्किंग ऑन वो बंद हो जाएगा। आपने जो ये ले रखा था ना, 3 वर्चुअल सीपीयू, सॉरी 8 वर्चुअल सीपीयू, 32 GB रैम, या जो ने आपसे छीन लिया, किसी और को दे दिया, बट आपका डेटा वहां पर सेव पड़ा है। नाउ आफ्टर 4-5 आवर्स सब कुछ फ्री हो गया, देन यू गो हेड एंड टर्न ऑन द मशीन। अगर ऑन हो रही है, फ्री है तो ऑन हो जाएगा, एंड देन योर डेटा विल बी सेव देयर। ओके, तो मतलब जब तक वो मतलब कोई और यूजर नहीं मिल रहा है तब तक हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो जैसे लोड बढ़ जाएगा एजोर का, वो किसी और को दे देगा और राइट, हमें मतलब उनको स्टॉप कर देगा जब तक कि राइट, अवेलेबल ना हो। परफेक्ट, यस। ओके, थैंक यू सो मच। बट इसमें भी थोड़ा सा चार्ज होगा, आई टेल यू व्हाट। सी, टू सेव योर डेटा, राइट, टू सेव योर डेटा, आपका मशीन अगर डिलीट हो रहा है ना, अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, डिस्क वाले टॉपिक पे हमें जा नहीं रहता, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट इज द मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो है ये सब है, ठीक है, मशीन है किस चीज में? मशीन तो अपने आप में एक वर्चुअल चीज है, राइट? इसका एक्चुअल प्रेजेंस कहां पर है, फिजिकल प्रेजेंस किस चीज में है मशीन का, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का फिजिकल प्रेजेंस कहां पर है? डिस्क। उस रीजन के एक हाँ, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, राइट? हाँ, सीपीयू तो डेफिनेटली है, बट सीपीयू डीलोकेट हो रहा है ना, जैसे ही डीलोकेट हो जाता है तो सीपीयू का चार्जेस हमारा खत्म हुआ। बट यस, व्हेन आई से आई विल स्टॉप द मशीन एंड आई एम नॉट डिलीटिंग इट, तो मतलब मेरी मशीन कहीं ना कहीं सेफ है, विच इज यस डेफिनेटली, कि किसी ना किसी रीजन के, किसी रैक के, किसी सर्वर के, या किसी सैंड स्टोरेज के कहीं पर भी एक डिस्क है, जिस डिस्क को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, राइट? छोटा सा ही सही, लेकिन आई एम यूटिलाइजिंग अ डिस्क ऑफ ऑफ अज्योर, तो वो डिस्क का चार्ज जो है मुझको हमेशा लगता रहेगा, विच इज नॉट वेरी मच, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा नहीं होता है वो, लेकिन स्टिल देयर विल बी सम कॉस्ट। लुक एट दिस, ये दिख रहा है 127 GB का डिस्क जो है मैं अज्योर का यूज कर रहा हूँ। इवन इफ माई मशीन इज टर्न ऑफ, तो ये तो है मैं यूज कर रहा हूँ, चाहे मैंने स्टॉप डीअलोकेटेड हो या अलोकेटेड डीअलोकेटेड हो, किसी भी तरह से, whatever the reason, if your machine is lying there, तो you are paying for this 127 GB। हाँ, आपने stop deallocated अगर कर दिया है, so you are not paying for this virtual CPU and 8 GB RAM, इसके लिए मैं नहीं पे कर रहा हूँ अभी, क्यों? Because I'm not utilizing it, ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। द मोमेंट आई स्टार्ट द मशीन, देन आई एम यूजिंग इट, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ माई यूटिलाइजेशन और नॉट, ये डिस्क तो मैंने रिजर्व करके रखी है ना, इसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये 127 GB का मैं हमेशा पे कर रहा हूँ। सो ऑन द स्पॉट डिस्काउंट, इफ आई सेलेक्ट डिलीट, तो वो मशीन सब कुछ डिलीट हो जाएगा, देन सब कुछ डिलीट हो जाएगा, नो डेटा, नो हार्ड डिस्क, नो सी ड्राइव, कुछ भी नहीं बचेगा, एंड देन देयर विल बी नो चार्जेस। क्लियर गाइस? Yes. ओके, यस। next is your size, the machine size. See all sizes, there are n number of size guys, don't have to remember all of them, forget all of them, you don't have to remember any of them, because change होते रहते हैं काफी चीजें, तो आपको याद नहीं करना है। what you have to do is you have to understand the concept, और एक चीज आपको याद रखनी है कि because if you claim that you have worked for 3 or 2 years and you have built a number of machines as an implementation engineer, तो ये होगा ही नहीं कि आपको इसके फैमिली का नाम भी नहीं पता हो। The moment you say नहीं याद नहीं आ रहा, person will understand you are lying about it, you are faking the experience, right? So these are the family: D series, B series, L series, F series, right? इतना पता होना चाहिए बस, हाँ ये होता है। Why do we use D series? यहाँ पर है जनरल पर्पस, ये याद होना चाहिए। अब D series में कितने हैं, क्या है, you don't have to worry about it, मैक्सिमम टाइम ये चेंज होता रहता है, ठीक है? Why do we have after D series we have B series? Why do we have B series? Again, it's for general purpose. We have E series. Why do we have E series? E series, it is memory optimized. So interview question आता है कभी,
which series would you prefer, or which series would you recommend to your client? He has a memory optimized application. That time you should know, guys, that it is going to be an E series, right? That time you cannot say, no, I don't recall, because when you claim that you have worked for 4 years, 3 years, and you have built hundred of machines, 100 plus machines, then you cannot afford to say this, that I don't remember the family. Okay, so E series, it's memory optimized. By the way, what is memory optimized? Anyone knows? And L series is storage optimized. So what do you understand by memory optimized and storage optimized? And F series is for compute optimized. Yes, guys, any guesses? Probably for the RAM. I mean, Yes, perfect. Yes. There are many applications, guys. For example, some games, right? We have a game tester person. He wants to test some game. Now, his gaming requirement is that he should have a machine which has 100 plus RAM. It doesn't matter to him कितने data disk लगने वाले हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है. So it is a memory optimized application. He will look for memory optimized machine. So look at this. We have an option of 128 GB. Okay. L series is storage optimized. Someone is saying कि मेरा application का purpose जो है random data बहुत ज्यादा नहीं है, running data बहुत नहीं है, तो RAM it's okay, even if it is negligible, it's okay. What I want is data disk should be good enough. IOPS should be good enough. IOPS का क्या मतलब होता है, guys? Anyone knows? Input output per second. Yes. Did you understand, guys? What is it? IOPS? Would you like to explain it? Whoever answered, Munir or Prabhat, who answered? So basically, it is IOPS is input output per second. So how fast it replies back, or how fast that machine is. Simple. How fast your disk is, guys. ठीक है, कंप्यूटर फास्ट होना सिर्फ रैम पे नहीं होता है. आपकी डिस्क अगर स्लो है, रैम आप कितना भी बड़ा लगा लो, कुछ नहीं होगा. IOPS जितना फास्ट होगा, डेटा राइट और रीड उतना फास्ट होगा. सो दैट इज योर IOPS. तो कौन सा वाला जो है मैक्सिमम IOPS सपोर्ट करता है, वो हो गया द नंबर ऑफ डेटा डिस्क. If I create a machine under this one, then I can attach 32 disk. जब हम डिस्क पे जाएंगे तब हम देखेंगे, right? But these are the differences. कितना रैम ये सपोर्ट करता है. नॉर्मल वाले इसमें देख लो. If you create a machine with this one, you're utilizing 2 virtual CPUs, 8 GB RAM and 4 disks, maximum 4 disks. If I ask you to create one server with 5 extra disks, then you should not be taking this series. You should not be taking this one. You should not be taking. In fact, यहां तक कोई भी आप लोगे तो आपका पर्पस सर्व नहीं हो रहा. You will require a minimum of this. जहां पर 5 डिस्क अगर आपको चाहिए तो मिनिमम ऑफ दिस यू विल रिक्वायर. और इसमें इफ यू गाइस लुक एट दिस, यहां पर सब कुछ चेंज हो जाता है. मैक्सिमम IOPS, आपका ये प्रीमियम डिस्क सपोर्टेड है या नहीं, एंड मेन चीज इज योर प्राइस इज गेटिंग इंक्रीज्ड. Okay, but if I'm giving you any homework that though our disk part is not yet clear, जब होगा उसके बाद हम करेंगे, that create a virtual machine with 5 extra disks. These are called hard disk, guys. HDD hard disk, or you can call data disk. As of now, let's call it data disk. So there are 2 types of disk in any machine. One is your operating system disk. Without उसके तो बन ही नहीं सकता है. आपकी मशीन जो है अगर बनी है, so there has to be an operating system disk, right? We just discussed, मशीन एक्चुअल में होती ही डिस्क में. मशीन तो बस एक वर्चुअल नाम है. एक्चुअल मशीन कहां पर है? इट इज इन डिस्क. सो दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क, OS disk, operating system disk. And if I want extra disk, then I can create and attach. I can attach an existing disk. These are called data disk. Data disk, operating system disk. Let me open my this one and I'll show it to you. I'm sure you must have seen it, all of you, but still, just for your understanding. So guys, this is my operating system disk. इसको मैं निकाल दूंगा तो कुछ नहीं चलेगा. These are my data disk. इनको मैं निकाल भी दूंगा, my computer is still running. मेरा डेटा यहाँ पर नहीं होगा जो इसमें है, ये डेटा नहीं होगा इसमें. ठीक है.
but this is my operating system disk and these are my data disk. Clear, guys? Yeah. So you will be definitely paying for that. तो यहां पर जो है डेटा डिस्क कितने लग सकते हैं उसकी कैपेसिटी डिसाइड करता है इसकी फैमिली. तो वंस गो थ्रू दिस, एक बार डी सीरीज में देख लेना, जनरल पर्पस. ठीक है, डी सीरीज इट्स डन. देन व्हाट इज इट, बी सीरीज भी है यहाँ पर, ये भी जनरल पर्पस के लिए. लुक एट दिस, और ज्यादा स्मॉल है. 1 सीपीयू 1 GB रैम 2 डेटा डिस्क. अगर आपको सिर्फ, इफ यू वांट दैट मोर ऑफ यू शुड प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रैक्टिस कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग यूटिलाइज कर पाए मशीन, सो मेक श्योर कि आप इस वाले साइज को लेकर मशीन बना लो. राइट, तो यहां पर आपका सिर्फ एक सीपीयू यूज हुआ. अगर आपके सब्सक्रिप्शन की कैपेसिटी और कोटा, व्हिच वी ऑलरेडी कवर्ड राइट लास्ट टाइम, कैपेसिटी और कोटा आपका 4 सीपीयू का है, सो विथ दिस साइज यू कैन क्रिएट 4 वर्चुअल मशीन्स. एंड विथ दिस साइज हाउ मेनी मशीन्स कैन यू क्रिएट? 2. Perfect. Are you getting it, guys? Yeah. Okay. Yes. So this is your machine size and it is directly related to money. Here is cost, यहीं पर दिया हुआ है. So make sure whenever you go and read this, साथ में आप cost पढ़ते रहो, पता चलेगा आपको कि कौन सा cost का क्या ये है. Okay. Now the question is, hibernation, leave it. User ID और password, इसको भी आज ही हम cover करने वाले हैं. ठीक है. But I have something else to share on size. It's not yet over. Now I have built this machine, or let me open your subscription. Prabhat, did you delete your machine? You created one machine, right? No, I've just stopped that. That's fine. I created just now. Okay. So this machine, Prabhat created. The size of this machine is standard DC, or let's open this machine. Guys, look at the options which I'm clicking. By the way, this is something new. Azure earlier did not have this ड्रॉप डाउन. पहले सारे ऑप्शंस लेफ्ट में होते थे. सो मेरे लिए भी नया है ये. विल हैव टू चेक कि क्या किस में है. राइट, अर्लियर सारे ऑप्शंस इस तरह से होते थे. सो नाउ he has created this machine, guys. What is the size of this machine? 4 virtual CPU. Okay, let's say I asked Prabhat कि यार I did not want इतना heavy machine, नहीं चाहिए था मुझको. Why did you create 4 virtual machine CPU? I realized it now. ठीक है, you handed over to me yesterday. I saw it, मैंने उस पर काम भी कर लिया. But I do not want this much. इसके लिए मुझको बहुत पे करना पड़ रहा है. I was happy with one virtual machine and one RAM. Why one CPU and one RAM? I was happy with that. Why did you assign me 16 GB RAM? Who asked you to do that? Now please go ahead and change that. So do you think that the size of the machine can be changed? Yes, can be. Yes, guys, it can be changed. But what is a clause in that, or what is a catch in it? That you required a downtime. That you required a downtime. Now this machine, Prabhat's machine, is on. I started the machine. Let's go ahead and check if we can change the size. कहाँ पर है size का option इसका? It's under, I guess. Let me search it. Settings. Is it under settings? No. This. No, it won't be under this, but still we can check. Let me click on overview and see, these options have been changed now. So you guys will have to bear with me for some time, and you can also start searching it in your subscription whenever you have the machine. I'm sure all of you have access to machine, right? बस आपका option ही देखना है. Here it is, availability and scale, size. So if I click on size, what is the current size?
The one which is selected, it is the current size. How much is it costing? 23,000. I tell Prabhat, yeah, I don't even have that budget. इस project के लिए मेरे पास उतना budget नहीं. Why did you do that? Please change it to very basic. What do you have? What do you have available? He says, I have very now you guys will have very less options here because see, and this is unsupported in availability zone, insufficient quota. बहुत सारे options यहाँ पर incorrect हो गए. But whatever it is, let's say this is available. हाँ, this is available. So instead of I'm saying कि यार आपने बड़ी मशीन दे दी, imagine I'm telling you आपने छोटी मशीन दे दी. I needed a machine with 32 GB RAM. Please resize it. So can he do this, guys? Yeah. Yes. 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 But what is the catch? The moment I do this, You have to stop Downtime. the machine. what does it say? Do you want to resize the Downtime machine? required. Changing the size will cause a reboot or it to be restarted. The moment I click here, yes, this machine will be rebooted. So if an interviewer is asking that is downtime needed to change the size of the machine, yes, it is needed. Even if it is a prod machine, non-prod machine, kuch bhi ho, the moment you change the size, you'll have to reboot your machine. Is this clear, guys, to everyone? Look at Yes. this. It is starting now. It was already in running, but it got stopped and now it is starting. So this is how you change the size of your machine. Got it, guys? Now I upgraded the size. Can you degrade the size? Yes. Yeah. Look at this. Okay, with you guys, it's a very limited option. Let me open my here. So the current size which I have of this machine, what is the current size, guys? Where can I check? In overview, Overview. Availability. Overview and availability. Why don't I just check? Yeah, I can check here, right? I mean, yes, I can check in overview, but if I have it here, why would I go again? So this is my current size. Right? This is my current size, but I'm saying I want very small machine. Right? Let's say I say it's in where Central India. Okay, my Central India application, it doesn't use very well. It's not we are not utilizing it. So instead of 2 CPU and 8 GB RAM, you give me anything which is smaller. Let's see if that is possible. Give me 1 CPU and 3.5 GB RAM. It will save a lot to me. And just click on resize, and yes, you can resize the machine. Is this clear, guys? yes. Yes. Now, let me check if you guys have any other questions on. Think about it, guys. Do you have any questions on size? Okay, one more trick. Let me tell you. Now, this machine of mine, it has this machine. Okay, this DC. If I log into this, this has 4 disks attached to it. 4 disk, data disk. Or not 4, actually, there is 6. 6 data disks are there on that particular machine. 6 disks are there, and now I'm asking you guys to change the size, and I'm saying give me something small size. Give me BS1. I don't have much of a budget. Give me 631 rupees wala machine. Can you do this for me? Yes, you can. No, you cannot. My current existing Yes, machine we do. has 6 disks. I might have some data. If I give you 2 disks, तो क्या हो जाएगा उससे? Yes, data will loss. Yes. So either you'll have to take a confirmation कि आपका data चला जाएगा, you'll have only 2 disks. Is it okay? They say yes, then yes, you will go ahead. If no, you will always prefer the equivalent machine. Is it clear, guys, to everyone? So if there is upgrade or downgrade, the disk size should be same. No, downgrade के लिए नहीं होगा ना. See, I have this size, 16th of this data disk,
right? Now I'm saying, why am I downgrading? Technically, your point was correct, but why am I downgrading? You will ask the question, why am I downgrading? I'm saying neither I'm using your 8 CPUs, I'm hardly using 1 CPU, nor I'm using 32 GB RAM, I'm just using 3.5 GB RAM. Neither I'm using your 16 disk, I'm just using one disk, one operating system disk, one data disk. Then you think there should be a problem in downgrading? No. Right? And you're not replacing the disk, this is just the capacity of the disk. तो ऐसा नहीं होगा कि जिसमें डेटा है वही वाला डिस्क निकल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है उसमें. ठीक है गाइस, गॉट इट? Okay. डिस्क तो सेपरेटली क्रिएटेड रहते हैं ना, तो अगर कोई डिस्क किसी मशीन से डीअलोकेट हो गया तो उस डिस्क को हम दूसरे मशीन के साथ अलोकेट कर सकते हैं क्या? Yes, we can. We'll see that when we go to disk, guys. Okay. That is the reason you had an option here when you go to disk. You had an option to create and attach new disk or attach an existing disk. तो किसी और मशीन से निकाला डिस्क पे आप इस पे लगा सकते हो. ठीक है, but we are not yet there. We are going to go there. So I hope this is clear, guys. Next, let's go ahead and. Well, by this size means whatever we are resizing this in availability set, that disk is means that is OS disk, na? That No, we upgraded. Didn't get your question. Why did you mention availability set here? In availability set there is option of size, na? There is we change just now the resize the machine, na? No. It RAM has and nothing. CPU. It has nothing to do with availability set. Whenever you create a machine, there is a size. Yes, In availability size, set, you are creating machine, so yes, there is a size. It has nothing to do with your availability set. I'm saying about the size. Just now we resize the machine, na? That No, I'm trying to understand how are you relating this with availability set? No, that is my word mistakes actually. Okay, got it. So there's no confusion, right? Yes, no Even if confusion. there is What I'm no- saying, Tell me. what I'm saying, that size just now we resize, na, that there is some data disk is showing four disk, 4 data disk, 8 data disk something. That one is OS disk, na? No. Why would you have multiple OS disks? You cannot have multiple OS disks. OS disk तो एक अपने आप ही बनेगा. That is not an optional. You cannot have a server without operating system disk. You cannot have a machine. मशीन तो क्या है, वर्चुअल चीज है. उसका फिजिकल प्रेजेंस जो है आपका मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा जो है, इट इज सेव्ड इन योर ओएस डिस्क. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट 4 डिस्क एटसेट्रा, ये आपके डेटा डिस्क है. ओएस डिस्क हमेशा एक ही रहेगा. यू डू नॉट रिक्वायर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क. Is it clear, Munir? Yes. This is my machine. Okay, if I go to disk, I will have only one operating system disk, OS disk. Look at this. एक ही section है, एक ही disk है. That's it. उसके बाद यहाँ पर नीचे है, I can create जितना disk मुझको चाहिए. Now this is where I will stop if my size support only 4 virtual disks or 4 data disks. Look at this. This got grayed out. Why? Because this size of machine doesn't support more than 4 data disks. Got it, guys? Yeah. So if you want to create a machine with one operating system disk, which will always be one, and multiple data disks, 8 data disks, then you'll have to select the size accordingly. Is it clear, guys? I'm waiting. I'm giving you some time to think, to recollect, to think about it, come up with the questions. When you added these disks, no, all of them have got just 120 IOPS, whereas the OS disk has 500 IOPS. So can we change this for the new disk? I mean, the extra disk what we add, do we get options there as well? Change as in, I didn't get you. How exactly you want to change the disk? जो नया डिस्क तुमने ऐड किया ना, उसका IOPS 120 है, राइट? Okay. अगर हमको हायर IOPS वाला डिस्क चाहिए होगा तो वो चेंज कर सकते हैं क्या स्टोरेज टाइप में
Because As it far, is yes, you can. As far as your size, your machine size is supporting. What my machine size supports? Here, look at this. What is it supporting? 500. Right. So now if I disconnect this disk and try to attach a new disk, जिसका जो है IOPS size 400 इसका है, IOPS का है, it will work. But if I try to attach a disk which has 600 IOPS, will it work? No. 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 So as far as it is within this one, you can change the disk, but you cannot change the IOPS size here. You cannot do that. Existing disk में आपके पास already है कोई 120 IOPS वाला, you can attach that. Is it clear, guys? Anyone has any doubt, any questions? Okay, so let's quickly go ahead and check while creating it. We get user ID and password. So we'll be talking about user ID and password now. Yeah. Okay, I won't use my image because मेरे वाले image में user ID password नहीं पूछेगा. So I'm going to use a simple image which will ask for user ID and password, right? So guys, user ID and password. This user ID and password has nothing to do with Azure. ये user ID and password कहाँ पर use होगा? When you connect to your machine. Most of the time, your client will tell you which user ID and password they want to keep it. Is it clear, guys? Yes. It has nothing to do with Azure. इसका आपसे आपके Azure ID से कुछ लेना देना नहीं. This is something different. Okay. Now the question is, let's say you have created a user ID and password, and you have forgotten the password. So, if you have forgotten the password, do you think you will be able to recover it? We can reset it. From where? When you go to that virtual machine, वहाँ पे option मिलता है to reset password. I think password we can reset, and the username I think cannot. Okay. Or otherwise we have to capture, means we have to make the image like you show the capture there. Generalized image we can means we can create the generalized image. No. Let's not get into workarounds. I told you guys, let's not get into workarounds. Simple question, if yes or no. Workarounds will do later. जब एक बार understanding अच्छे से हो जाएगी ना, तब Only हम password workarounds पे or करेंगे. So can I only reset the password? password or no? Yes or no? What do you Yes. think? Yes. 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 Okay. Now I do not know the username also. What can I do? As far as we able to access the portal, we can be able to see the username, the From where? password. How? Let's Sorry? open. How can I see this? Let's open his machine. So I guess only Prabhat knows his user ID and password, right? So don't share it, Prabhat. Okay. Now, who can guide me? Guys, 1 minute is left. So let's disconnect the session and we'll rejoin. Owner, probably the subscription owner can do that. No, it's completely. Go to help. Under help, we can see that. Guys, 1 minute is left. Let me disconnect the session. Do you guys need a break? Yeah. Okay, let's No, we'll continue. continue. Let's continue using the same link without any break.